Hi guys, welcome to another episode of It's Unscripted. I'm Srishti Tyagi. I'm Mannat. And I'm Nandini. So before moving forward, let me introduce both of them to you all. They both are professional Kathak dancer and I'm really looking forward to have this conversation with both of them. So, how are you guys? How are you feeling? Currently quite excited as well as nervous. I think same. We're as thrilled as you are to have this conversation. I'm super pumped. I'm super pumped to learn new insights about Kathak because I have zero knowledge about this. So I want to know how did the interest started to develop? कब से आप लोगों ने start करा उसको pursue करना, learn करना? So for me, I think dance is something that I'd say, blessed with and born with. Like I had that knowledge of beats and music. My mom often recalls this incident wherein I would go to play school dancing as soon as the drums started playing. So I was really young to even realize that this is something. Yeah, I enjoy doing. Yeah. So I think I was 5 years old. My mom has a musical background. Okay. And my nani is a sitar vadikia. So my mom wanted me to put into dance. So you come from a family of artists. Yeah, but they have pursued their graduation, but they are not pursuing it currently. Okay. Yeah. Right? So, but my mom was really passionate about me, just getting into Kathak, and she has, seen it throughout Madhubala ka and movies mein and all. So she always wanted me to pursue dance. And what about you, Nandini? As Mana Didi rightly put, I think even I've been born and blessed with the knowledge of beats and dancing. Very funny or this thing. Whenever we used to go for movie shows in the theater, whenever or whichever song that used to come up, I used to run down from my chair, go up to the screen, wherein there was the whole screen. वहाँ पे stairs थी. I used to run up there, go in the middle and dance in front of the whole audience. And my parents used to, my parents used to go down the seats and we don't know this kid, who is this kid? And then I think main interest that I had for dance was हर बच्चे को होता है बॉलीवुड डांस सीखना है. मैं बचपन में आई यूज्ड टू टेल माय मदर कि मुझे ढुमके वाला डांस सीखना है. मुझे ठुमका भी बोलना नहीं आता था. मुझे ढुमके वाला डांस सीखना है. But then I think mothers are the best directional guides. Definitely. They tell you what to do, what is the right thing, and at such young age she put me into classical dancing. Every weekend wear a white kurta pajama, go to Kathak classes. उस टाइम पे तो ये था कि ज़बरदस्ती हो रहा है. Okay. So I started with one guru, Gauri ma'am, and then I continued. I was 5 when I started learning. Okay, you were also 5 when you 5. Okay, I guess so. This is the age when people start learning Kathak, or I think it's better for kids to start early because I feel your body structure, your bones grow in that manner. Okay. Actually, Later. So I think for nurturing such a technical dance form, which requires so much of patience, it's important to start when you're young. Because at I think our age, when we're in our mid-20s, we're just so fast-paced that we want things to be learnt like this. Yes, we I think we struggle with time management and such कि एक घंटे की क्लास है इतने में इतना ही होगा. मतलब तो I think बचपन में accounted for. बचपन में I think we have more time and we're so much more flexible to learn things as compared to the students who start late in their life. So then I was 5 and then I think I just want to add up that Manna Didi and we learned from our same Guru Alaknanda ji, and I was 10 when I joined Didi, Alaknanda Didi, and since then I've been with her. So my whole journey is of 17 years of dancing. Amazing. Yeah. As I mentioned earlier, I have no knowledge about classical dancing. For someone who is a noob like me, I want to know what is Kathak. What is basically Kathak? So Kathak, जो Kathak है वो कथा वाचन है. Okay. So it's basically storytelling. Yeah. So we depict various stories and depict various things around us through these dance moves. जैसे ये फूल हो गया, हमारी ये बर्ड हो गई, ये बर्ड हो गई. हम लोग बहुत सारी कहानियाँ जैसे कृष्ण जी की रास लीला हो गई, हमारी सरस्वती वंदना होती है, हमारा
शिव वंदना होती है जिसमें हम शिव तांडव करते हैं, तो हम Hmm. बहुत सारी ये सब चीजें जो है हम अपने डांस के थ्रू So basically, you are telling stories through dancing. Yes. ओके, दैट्स अमेजिंग. तो इसमें अलग अलग भी कुछ होता है कि आज हम, जैसे आपने मेंशन किया, शिव वंदना है और तांडव है, तो एक कोई आप पर्टिकुलर स्टोरी उठाते हो एंड देन यू डिपिक्ट इट, या कुछ अलग ही एक चीज रहता है? ऐसी कोई भी कहानी को हम लोग ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, हम्म. बट हमारा थोड़ा माइथोलॉजिकली भी रूटेड है हमारा डांस फॉर्म. Actually, yes. मतलब you So- can improvise it, right? Definitely, it is definitely. Kathak is a very flexible dance It's form. it's how you perceive things actually. Yes. Okay. It's तो up अपने to पास से if you want to create a new story, you can do that, Definitely, right? Yeah, definitely. 100%. You can depict your own story as well. Kathak gives you that leverage. It gives you that It's freedom to what is the play with story it. and how you want to depict Yeah. it. Okay. It's been like 20 years of you dancing and 15 or 17, 17 years yes. of you. I'm very weak at That's maths. okay. So Nandini, what is dance for you? So when I started learning, of course, there was a break of I think one and a half year between where I started and then I took a break and then I joined Alaknanda Didi. That's the time I realized that there is something missing inside of me. Maybe this whole fancy Bollywood dancing is not helping me or is not taking me anywhere, which is why Okay, so I you need switched. I switched, yes. So that one and a half year, I decided to go follow what I wanted to since childhood. Okay. I do my Bollywood dance. तो मैंने वो बहुत किया and but then there was something actually missing and I think maybe it was Alaknanda Didi और मतलब मेरा भी उसमें of course dedication and my mother's actually dedication that it led me to think this is what I want to do. I breathe also in a rhythmic pattern now. I think that's true. I think even if we have to let go of our breath, there'll be 4 beats that we'll go, and then we'll take another breath. ये हो जाता है. I think with being so inculcated in dance for so long. What do you want to add to it? Like, what does dance means to you? I think a dance for me holds a lot of meditative energy. Okay. I read I this agree. article earlier where it was specifically about these Indian classical dances, and it said that it required a certain level of coordination of your mental being with your physical being, and that requires 100% of the presence, right? So when you're on stage, you have to be conscious about your expressions, your physical movements. तुम्हारा पैर किधर जा रहा है, क्या चल रहा है. Also the stage presence कि if you're performing in a group, That's true. you need to see कि if all formations are in place and कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो maybe you have to improvise Exactly. at that I very think moment. it Yeah. kinds of make you multitasking, you know? Like you're multitasking You every can't time. just think one thing कि ये step है फिर ये step है फिर ये step है. No, you have to think about everything. Everyone, There's someone yeah. dancing beside you. There's someone behind you. And you have to take care of the expressions, your footwork, Everything. your hand You're movements, and constantly everything. conscious. I would like to add, IPA has added a lot of skills. For people who don't know what is IPA. IPA is Alaknanda Institute of Performing I'm Arts, sorry. which is led by our guru Alaknanda Di. IPA mein we have learned a lot of these life skills. I'd say number one being time management, Okay. That's right? Because you know we have people of all age groups. मतलब हमारे यहाँ पे 10th के 12th के बच्चे boards भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, school We भी have जा tuition रहे हैं. teachers. Exactly. Mothers. Dance class भी कर रहे हैं, dance में perform भी कर रहे हैं. They're touring abroad also. Yeah, सब कुछ हो रहा है. So dance does give you that strength. Yeah, and also it helps you to interact with and be with people like of all age groups coming from That's different true. backgrounds. Like हमारे पास सबसे बड़े लोग भी होंगे, बच्चे भी, toddlers भी And हमारे that यहाँ kind हैं. of works as an inspiration for you. Like, Yeah. Actually, it gives us that feeling to never give up. yeah, exactly. I And mean, there if- is no age limit to Actually, start something. there are kids who are sleepy when they're joining the classes because they're 4 or 5, but they're sleepy, and then we're like, oh, so cute. Even we can do then. And then there are people. You have done that. Yeah, we Yeah, have but done then that. भाई ना उस टाइम पे even we didn't realize कि ये इतना बड़ा Yeah. टास्क हो सकता है. मम्मियाँ भी देती थी, but then अब देख के लगता है we've overcome this stage. Yeah. Exactly. And honestly, initially when I started dancing,
I didn't enjoy Kathak. ठीक है? It was much later in life क्योंकि समझ ही नहीं आता था क्या कर रहे हैं. So it was just your mom who is sending you to dance हाँ, class कि हाँ, जाओ. proper जाना ही जाना है और वो theory exams definitions learn Yeah, करना. you have to learn also, हाँ. right? You have to give So exam. we have theory We have written these exam. live biographies of people to learn and we have this whole exam पूरा math भी है. We have our tals तो उसमें बोल I never knew about all these things. Yeah. I thought you just have to learn the mudras and stuff and that's it. no. There's So you have to give exams. yeah, also. there's yeah. theoretical knowledge we have before, given behind all this. of these exams and I'm sorry but it's pretty hard. So अभी जितना भी हमारा conversation हुआ, I have heard this name, हाँ. Alaknanda Didi. हाँ जी. हाँ जी. So I guess she is your dance teacher, Yes, right? our guru. Yeah, हाँ, guru Guru. actually, yeah. तो मैं जानना चाहूंगी कि the role of guru is really important, I feel, in every aspect. Actually. And you have spent 20 years working with her, learning from her. So how does it feel to have someone so close to your heart as your teacher? Guru is just like your mother. Yes. गुरु आपका सेकंड मदर होता है. जैसा माँ आपका ध्यान रखती है वैसे ही गुरु भी आपका ध्यान रखेगा. बस गुरु जैसे गुरु अपने शिष्य को तराशता है, आई थिंक हर शिष्य भी अपने गुरु को तराशता है. एंड आई थिंक वी बीन रियली ब्लेस्ड टू हैव अलकनंदा दीदी इन आवर लाइफ. Didi is not only our dance teacher or our instructor, she is our friend, she is our sister. We call her Didi, she is our sister. She's our best friend. I would also call her my girlfriend. I can go and gossip to her about anything and everything. I've literally discussed weirdest of things with her. And So you're so close to her. yeah, and So is it just you both or everyone is this I close to think her? Didi shares this relationship with all of her Yeah. disciples. And she allows you, like she gives you Yeah, that she space. gives you that space. As she said that she's not just a dance guru for us, and I would also say that she has played a very important role in my Actually. upbringing. yeah, Yeah, of To course. imbibe those values, all of these. that's true. I mean, she has been a major part of our life. And third parent की तरह, I'd say, she is for all of us. और I also feel कि एक अच्छा गुरु का होना is very important because that is when things starts to change. अगर गुरु ही अच्छा नहीं होगा आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ना. नहीं आएगा, You that's would not true. go there कि मजा ही That's नहीं आ रहा है, true. बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो नहीं जाऊंगी. That's I true. think गुरु का वो position भी होता है to be selfless and you know वो To just सिखाना, give to everything. just to give to ये मेरा give बच्चा those है, इसको opportunities सब दे and दो. all of those things. Oh my So god, you guys are Didi so is- in love with her and I we are very lucky to have her. I think when Mana Didi said that Didi has helped her in her upbringing, I remember it was my first or my second international trip with her, and I came back and she told me you have to be more inclusive of people. मतलब तुम अपने में ही रहती हो, Oh. you have to include people around yourself. And I think it was that lesson that has made me go so far in life right now that I am so open with everyone and I'm very warm around people. I think So it's not just the dance steps and No, everything, it's the no. values And that she has values, given actually. to you. She Yes. has literally made an impact in both of your lives. Yes, Actually. truly. I Actually. love this. It's so heartwarming. Yeah, Yeah, really it is. Is Indian classical dance form related to spirituality? Like, what do you think? Yes, because Indian classical dance, like in Kathak, मैंने हिंदू mythology के बारे में तो आपको बताया है कि जैसे हम लोग शिव तांडव, हमारी सरस्वती वंदना और कृष्ण की रास लीला और दुर्गा. Draupadi. You must have knowledge of all All these of things, these. right? Exactly. Yes. You know, the worst part is that this generation doesn't have any knowledge about all of these mythological stories. Yeah, I agree. and I feel lucky to Through Exactly. dance we've learned so much. Yeah. Because हमें द्रौपदी चीरहरण भी दिखाना होता है, सीता हरण. Okay, so you do all these things also Yeah. through dancing. Yes. so it keeps us rooted with our Indian Exactly, culture. Yeah. Yes. तो वो नॉलेज पूरा आपको बचपन से ही यू आर हाँ अवेयर कि क्या हाँ, हुआ हाँ हिस्ट्री जी। में एंड यू आर परफॉर्मिंग इट. Yes. Yes. If you guys could do some mudras, I would love to see that.
Okay. We'll start with asayog mudras. पताका त्रिपताका अर्धपताका कर्तरी मुख मयूर आराज शुक्रतुंड मुष्टि शिखर कपित कटका मुख सूची अर्ध सूची चंद्रकला अर्ध चंद्र सर्पशीष मृगशीष सिंह मुख भ्रमर चतुर हंसास्य हंस पक्ष कांगूल मुकुल पद्मकोश अलपद संदंश ताम्रचूल त्रिशूल च. Amazing. Like, this is so crazy. I loved it. Yeah, I think it's the nursery rhyme that we've learned Yeah. for our dance. यार मुझे लगता है आप लोगों ने ट्विंकल ट्विंकल बाद में सीखा होगा, ये पहले सीख लिया Yeah, होगा. this forms the basis for Actually. all of our dance movements, so it's quite vital. ओके. कथक में मैंने देखा है कि घुंघरू आप लोग हमेशा पहनते हो. सो उसका रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है डांस में? एक तो ऑर्नामेंट वैल्यू है हमारा घुंघरूस का, एंड दूसरा हम लोग पैर मारते हैं, हम बीट्स, हमारी लड़ी होती है, हमारी तिहाइयाँ होती है, हमारे टुकड़े होते हैं, उसमें हमारे पैर मारते हैं हमारी बीट्स पर. तो वो साउंड आई थिंक क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए ऑडियंस को okay. उसके लिए यूज होता है. I think घुंघरू की आवाज से भी you can depict different notes. जैसे नायका की कोई डिफरेंट हम्म. डिफरेंट चाल होती है, तो वो उसमें भी कि कब ऐसे पैर Okay. पड़ता है और कब वो घुंघरू ऐसे बजेगा, तो That's true. वो डिफरेंट चीजें हम लोग सिग्निफाई करते हैं उसके through. ऑल्सो एवरी डांसर आई हैव मेट, तो वो लोग बहुत ज्यादा उसको बहुत प्यार से ही लेकर चले गए. वंस देयर वाज दिस नेबर ऑफ माइन, आई गेस वो कुछ तो क्लासिकल सीख रही थी, मेरे को नहीं पता कथक था या भरतनाट्यम था. आई गेस दोनों में पहनते हैं घुंघरू. हाँ, पहनते हैं हर और क्लासिकल classical. डांस. अच्छा, तो सारे क्लासिकल हाँ में जी. पहनते हैं. तो वो साइड में रखा, तो मैंने ऐसे उठा के कैजुअली साइड में रख दिया, एंड शी वाज लाइक, दीदी आपने ये अच्छा नहीं किया है, हाँ. मेरी मैम मुझे डांटेंगी. That तो- counts as disrespect. हाँ, उस टाइम मेरे को समझ आया है कि दिस होल्ड्स अ वैल्यू टू एवरी डांसर, और मेरे को नहीं पता था I उस टाइम. think जैसे हमारे आर्मी में people they worship their uniform. द कैप all of us we worship our work. जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, नोटबुक्स Yeah. हो गए. पढ़ाई की जो For- विद्या हम्म, होती है, For us our घुंघरू is वही value हो another जाता है. thing for us to worship. हम्म. हम we do puja before Oh, the any घुंघरूस. show. हाँ, before any show I keep my घुंघरू at least in the मंदिर, ओके. कि मेरे से कोई गलती ना हो, हाँ, क्योंकि हाँ. सब खेल आपके पैरों का है, हाँ, आपके हाँ. घुंघरू का है. देयर इज समथिंग कॉल्ड घराना. तो वो क्या होते हैं और आप कौन से घराने से बिलोंग करते हो? घराना सर आई थिंक बेसिकली ओरिजिनेशन तो हमारे कथक के 3 घराने हैं, दैट इज जयपुर, बनारस एंड लखनऊ. हम लोग लखनऊ घराने से हैं, एंड हमारे जो लखनऊ घराने के फाउंडिंग फादर वी कैन से इज ईश्वर प्रसाद जी. तो उसमें था कि ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण जी उनके सपने में आए थे, ओके. एंड उन्होंने ऐसे उनको इंडिकेट करा कि आप कथक का Bring कुछ back चलन the लाए, originate चलन movie वापस किया. लेकर आए. Yes. तो फिर उन्होंने वो स्टार्ट किया, एंड अब जो हमारे बिरजू महाराज जी हैं, अच्छन महाराज जी हैं, लच्छू महाराज हाँ जी, जी. ये सब लोग हमारे लखनऊ घराने के हैं, Exponents. एक्सपोनेंट्स हैं. एंड बाकी हमारा बनारस एंड जयपुर घराना है. डिफरेंस अगर करा जाए, लखनऊ घराने का इट्स मोर ऑफ भाव, आपका एक्सप्रेशंस हो गया, आपके मूवमेंट्स हो गए. Delicate movements, more on the लास्य side. तो Yes. जैसे हम तांडव और लास्य में डिफरेंशिएट करते हैं. तांडव आपका यूजुअली इज कंसिडर्ड अराउंड योर शिव जी का हाँ, नाटक, या. एंड देन देयर इज लास्य जो आपका पार्वती का मूवमेंट आता है. ओके. तो या तभी वो जो हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं कि आधा शिव हाँ, आधा हाँ, पार्वती, हाँ. दैट इज तो जो हमारा लखनऊ घराना है उसमें हम लास्य या हमारे एक्सप्रेशन तो डांस फॉर्म का भी डिफरेंस होता है. इफ यू बिलोंग टू लखनऊ घराना कुछ डिफरेंट आप स्टेप्स होंगे, और इफ यू बिलोंग टू बनारस कुछ हाँ ऐसा. जी, जयपुर घराने में वो नीज के सपोर्ट से चक्कर लेते हैं. उसमें हाँ उनके हैंड मूवमेंट्स में भी बहुत फर्क बहुत होता है. फर्क जैसे होता हम है. सीधे हाथ के या खुले हाथ के चक्कर लेते वो हैं, ऐसे. उसमें उनके बंद हाथ के होते हैं ऐसे राउंड, मतलब छोटा छोटा डिटेल्स, छोटा छोटा, बट द बेसिक स्ट्रक्चर स्टिल रिमेन्स द सेम. तो जैसे आपने बताया कि आपने बीच में बॉलीवुड की तरफ शिफ्ट हुआ, एंड आई एम श्योर कि आजकल जनरेशन का इंटरेस्ट डेफिनेटली उधर की साइड थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज दैट इज नाउ कंसिडर्ड एज द कूल स्टफ, यू नो. तो उस पर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? See, I won't lie, मैंने भी when I was in 6th 7th standard
मेरा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कथक का क्लास होता था, Oh! ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एशली लोगों का क्लास होता था। तो मेरे भी पूरे रूटीन्स है और मैंने बहुत ये भी पूरा एक्सप्लोर करा है, बट आई थिंक that one dance form that connected So what is with that me one most. thing that pushed towards Kathak? You know what? आप कथक और any classical dance forms as a foundation for other dances. क्योंकि I was having a conversation with Nandini also. She mentioned the same thing कि it is the foundation. This is what my mother Yeah. taught me. I'm still repeating the same line. क्लासिकल डांस सीख लो सब आ सब जाएगा। आ जाएगा। तो इट्स ट्रू, क्योंकि क्लासिकल डांस में आपको इतना ग्रिल कर देते हैं, इतना आपको रियाज करा देते हैं, आपके एक्सप्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपके मूवमेंट्स इतने, आपकी बीट्स की नॉलेज, मैंने अभी जैसे पहले बोला वो मैथ का, बीट का कैलकुलेशन, बोल बहुत किसमें करना बैठा, पड़ता है। it gets so much easier. Like recently, I went to Poland for Cracovia Danza Festival, and And you performed there? Yeah, we performed there. That is so cool. Yeah, it was an amazing experience, and वहाँ पे we also got the opportunity to do these workshops, जिसमें हमने French dance and Polish dance दोनों सीखा. It was so much easier for us to catch up these dances. Once you develop a form, once you get the basics of a form, उसके बाद any dance is possible. You can Yes. learn it very easily. हाँ. Yes. But मुझे ऐसा लगता है कि I think in today's world when everything's so fast paced, having a balance in life with classical dance is a must. At least this requires practice and time. And I वो don't- patience develop करना ना Commitment itself में एक also. skill है. What do you guys feel? कि आजकल लोगों में नहीं है इतना commitment और patience? नहीं है, बहुत ही ऐसे फास्ट पेस्ड रिजल्ट्स चाहिए हमें. आई थिंक इट टुक अस गुड 15-16 years to be capable enough to perform on Actually. stage. To actually call Is you every- dancers. Yeah. And this also is like a, क्या हम अभी भी डांसर हैं ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा- एक क्वेश्चन अंदर अभी Actually. भी आता है. तो एक ये वाली जो पेशेंस है वो नहीं रह गई है अब किसी में. Nobody can invest 15-16 years and Monday, Wednesday, Friday हम रियाज पे जा रहे हैं और घर सिर्फ में वही भी हम नहीं, घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे actually. हैं. हाँ. कोई nobody has that kind of patience. Bollywood dance वही है exactly. You see, you copy. Yeah. आजकल वो तौबा तौबा का Yeah, ट्रेंड. exactly. कितने And लोग only आपको these are the people that are going viral on Instagram, I swear. कितने लोग आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्लो करके मोशन में दिखा आपको रहे करके हैं. दिखाएंगे, आप सीख लोगे. पर यही चीज अगर हम आपको क्लासिकल में करके दिखाए, हाँ. आप उसको 20 बार नाच लो, करोड़ बार नाच लो, फिर भी यू Yeah. विल नॉट बी एबल Because टू it डेवलप requires द practice. ग्रेस. आप लोग Sure. खाना भी ऐसे ही खाते हो. But you know what? Kathak does add a lot of diva-ness to your That's personality. I And this is swear. something that my Yeah. friends have mentioned many a times. हाँ, मतलब ये भी करेंगे तो ये भी ऐसे ग्रेस में जाएगा. हाँ, मतलब वो आ जाता है. Have you guys ever considered opting this Kathak as a profession? So I'm currently studying. I'm pursuing my MBA and I'm in CS professional. And I've been dancing for 20 years. And yes, I have given this a thought. Even our guru says that you need rock solid career. You have Yeah. to have that kind of stability. And then maybe you can just start with this, Okay. like simultaneously. And I don't think I can imagine my life without it. And yes, I will somewhere down the line pursue. And what about you, Nandini? I think Didi has given us a very holistic development at IPA. मतलब अगर हम वहाँ पे as a student हमने join किया है, we are currently there teaching also. तो That is so cool. वो when we were young, when we were in school, मतलब हम खुद भी सीखते थे उस टाइम पे, but जल्दी आ जाओ तो तुम बच्चों को सिखा देना, तुम्हें तो आता है, your seniors now you have to train your juniors. And जैसे बचपन में मतलब I'm speaking for myself, मैं तो स्कूल से आती थी चौक चुरा कर और मैं अपने बोर्ड पे लिखती थी कि आज मैंने ये पढ़ा, and then imaginary kids used to be there and I used to teach them. I have I also have done done that this. too. मेरे teddies थे. सिखाने में there's a spark that comes. Yeah. तो वो I feel that. तो I think down the line definitely I'm working right now. एंड ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस छूट रहा है या डांस क्लास छूट रही है, बट आई ट्राई टू मेंटेन कि मैं हफ्ते में 2 बार तो जाऊँ, अपना घर पे रियाज रखती रहूँ. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि जैसे मूवीज में मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि जो डांसर्स लोग होते हैं, इफ दे आर फीलिंग सैड तो वो पूरा नाच नाच के अपनी रेज निकाल देते हैं. आप लोग एक्चुअली ऐसा करते हो? मैं तो इतना करती थी. ड्रामेटिक नहीं होता. But as I said कि मतलब
एक बहुत अच्छा एक लेट आउट Let out है, vent कर है। सकते हो. जिससे you can just let out So all you your are sad, negative you're crying and emotions. you're dancing as well. यार मतलब वो तो हाँ अब जनरली इफ यू से कि आई थिंक एवरी पर्सन डज दैट. आप सैड सॉन्ग्स लगाते ही हो. हाँ, but मैं तो I खुश don't होती तो can't- तब तो मैं भंगड़ा भी चला Yes. देती हूँ. I love Bhangra. तो है ना? वही है हम लोग हाँ तो हम- बट मैं रोते रोते भी कई बार मुझे ऐसा लगता है यार ये सब छोड़ो, फोकस ऑन नथिंग. कई बार ना ऐसे हो जाता है जैसे मैं क्लास से आई हूँ एंड कुछ क्लास में चल रहा था और फिर घर पे आगे कुछ हो गया, सम सिचुएशन कम्स अप, लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, सैड. ये सब छोड़ो, वो टुकड़ा क्यों नहीं हुआ, हाँ वो क्यों नहीं आया, ये वो इस पे सब में focus क्यों नहीं करो. आया वो लड़ाई छोड़ो, वो गुस्सा छोड़ो, ये पे इस पे फोकस करो. Dude, she was telling me कि हर गाने का अपना ताल होता है हाँ. and ये और मुझे कुछ समझ रहा है. हाँ अच्छा ठीक तो है, आप कोई भी I'm not a dancer. but take any song, say तौबा तौबा सब तौबा beat पे ही तौबा. बैठे तार So is this is basically also beat no जब मैं 5 साल की थी अगर मैंने ज्वाइन कर लिया होता, but अभी भी you can yeah start. you can start. I think I should start. There's never an age where you can stop. Also, I'd say that this aspect of your life also has a lot of bling and glamour to it. So it's really happening there. Hey, you guys are performing internationally and हाँ. that is something to be proud of. I think I have been to 3-4 countries For with, dance? with Didi. Hmm. I started So when I that's- was 12. Okay. 12 So what is the singing- story behind it? Like you go and perform or is there some festival Yeah, going on? there are Festivals. So festivals. then those festivals, they invite our institute to Okay. showcase our cultural, Values and tradition, Tradition. basically And our it dance. goes both ways. We also हाँ, invite them. कितना अच्छी फीलिंग है ना कि आप It's अपने a, ट्रेडिशन को हाँ. रिप्रेजेंट करो, साइड बाय साइड यू लर्निंग समथिंग Yeah. फ्रॉम देम आल्सो. I think over the years we've developed a separate family. ऑडियंस का डिफरेंस कितना फील होता है वैसे? बहुत. इंडियन ऑडियंस और मैं बताती बाहर का? तो जब मना दीदी she said ना that it gives you bling and glamour. Yeah. I was 12 when I went for my first international trip. My whole troop 13, 12, 13, 14. ऐसे Okay. थे हम सबका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज अ डांस ट्रूप था. वी वेंट टू बल्गेरिया एंड दीदी ने बोला था सूट्स रखने हैं और कॉस्ट्यूम है, ये 2-3 आप वेस्टर्न रख सकते हो आउटफिट्स, जो जब सारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो जाएंगी देन यू विल वेयर. तो हमारा परफॉर्मेंस खत्म हुआ एंड वी हैड टू गो अराउंड एंड शॉप अपने लिए या जो भी इंजॉय करना था. तो हमने दीदी को बोला दीदी ऐसी कॉस्ट्यूम में, तो दीदी ने कहा हाँ चल के देखो एक बार. तो we 13-year-old or 14-year-old kids, we were roaming around the markets of Bulgaria Wearing that Kathak in dress. costume, Oh God. green color ka lehenga with golden dupatta, and I'm not lying when I say this. Every person in the market stopped and clicked pictures Yes. with us. The same happened in Poland. Shopkeepers from inside came Wow. outside and said, "Where are you from? What are you wearing? Can we please click a picture?" I guess that was the motive why your Didi told you to not Because change. she knew Yeah. that. Exactly. So when you said audiences are different, those people, they don't know what our culture is, and that is how we present them. So Also, I really love the makeup, the gaudy makeup, the Yeah. costumes. It speaks for itself. actually, and without that makeup, I don't think dance is Yeah. complete. You won't be able to emote the way you have to. So now we are moving forward to another small fun segment, that is rapid fire. So what is Kathak for you? Describe it in one word. Meditation. Breath. Okay. If you could share the stage with any celebrity, who would it be? And this is outside Kathak. Yeah. In general. Shah Rukh. You love him? Love. दिलजीत दोसांझ forever and always. प्लीज दिलजीत इस बार मुझे अपनी स्टेज पे बुला लेना. Please, मुझे इस बार tickets मिल जाए. Your best performance that you enjoyed the most. I'd say there are two. Okay. Number one that I did in Poland, and number two would be there was this event Rangotsav. It was by IPA only, Okay. and that was in Triveni Kala Sangam, New Delhi. It was based on Holi, so that is another favorite show. I think even I have two. One is from my performance in London. Okay. We were depicting this whole Draupadi ka production that we had, and my father had specially flown to London to see the performance. That? Oh, that's so And- sweet. Literally, the auditorium was full. Nehru Center. People were sitting on the stairs, standing behind, and my father at the end of the show he was whistling.
I cannot forget that moment. I think Didi, even you can't forget it. That is so and sweet. and the another performance that I have is, I'm forgetting the name, but It was SODF only. हाँ तो उसमें very funny story. We were doing our finale piece and I was taking spins at the back of the. And So you we were fell. in a no. Listen, we were in a U and I was at the center of the U. Okay. And we were taking spins and पीछे वो backdrop था ठीक है. curtain. Mhm. And I was taking spins और मेरा हाथ लगा ऐसे curtain से and I got engulfed in the curtain and I went behind. Yeah, she went behind the curtain. I went behind. And And then 2-3 step आगे हो गए. I come out like ऐसे ही this. करके आई है ये पूरा. I this and then I continue the step. I Are you- cannot forget that moment. She sent me the video of that. Yeah. मुझे So ये I तो पता want था to कि ये remember moment the हुआ है. video. I want to see that after this. I want to मुझे see ये that. पता I था still have it. कि ये मेरे साथ हुआ है पर मुझे ये नहीं पता था ये वीडियो में आया है. Okay. If you could have any superpower, what would it be? Sleep anywhere, everywhere. I have the superpower already. I can sleep in Nobita. 5 minutes. I don't Nobita. have it. I want to fly across the world. मुझे जब मेरा मन करे इंडिया से हो गया बाहर चल जाओ. जब Anywhere मेरा in the मन world. करे घर से हो गया बाहर चले जाओ. The most adventurous thing that you have done. This was in school, and this was amongst our group's wish list. कि एक बॉम्ब फोड़ के जाएंगे स्कूल में. अब जा रहे 12th से तो. So I think I had saved this Nazi bomb from Diwali, and I waited till my farewell, and उसके बाद जैसे end वाली classes होती है, उसमें जा करके हमने सबने In the washroom or in the classroom also? हमारे ऑडिटोरियम के पास में हमने फोड़ा था. एंड वो इतना ज़्यादा सॉलिड बॉम्ब था कि मतलब सबका मतलब Blast. एंड मेरी प्रिंस हम पकड़े भी गए थे, बट लकीली मैं नहीं पकड़ी गई थी, मेरे दोस्त पकड़े गए थे क्योंकि वो कैमरे में पूरा ऐसे आए थे, ऐसे पूरा बाल बाल करते हुए. तो मैं तो पीछे थी, मैंने बस ऐसे बॉम्ब फेंका था और एक ने लाइट किया था और एक जस्ट चेकिंग कोई आ तो नहीं रहा है, क्या है. तो हमारी प्रिंसिपल ने ऐसे सीसीटीवी कैमरा की पूरे ऐसे पिक्चर्स की प्रिंट आउट निकाल के हर क्लास में कहाँ ये लड़कियां कहाँ एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम गर्ल्स राइट. तो ऐसे एक जा रहा था कि लड़के ही होंगे, लेकिन वो लड़कियों को देखो एक एक क्लासरूम में जा करके ये पूरा कर रहे हैं. फिर हमें पकड़े गए. मैं नहीं पकड़ी गई. बता दे क्या मैंने आई थिंक अपने प्री बोर्ड्स में चीटिंग करी है. फोन Stop. रख के. I'll not take this as an फोन answer. रख के. फोन रख के. और टीचर यूं आ रही है और फोन यहाँ है. That's और उसमें ऐड करने के लिए मेरे सामने में जो मेरी फ्रेंड थी उसके पास तब ना सिम नहीं होता था, तो वो उसने मुझे ऐसे पीछे कहा, ओए सुन ना इसका आंसर भेजना. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे पता है उसके पास व्हाट्सएप तो चलने नहीं वाला है, तो मैंने उसको स्नैपचैट पे भेजा. ठीक है, अब मैं अपना वापस कर रही हूँ कंटिन्यू, अच्छा देख फिर ऐसे कर रही हूँ. और फिर वो मुझे पीछे बोलकर जब टीचर चली गई मुझे कह रही है यार हॉटस्पॉट तो ऑन कर. चीटिंग करने की हिम्मत नहीं होती. वो बहुत Same, डर लगता same. है. और मैंने वो कभी प्री नहीं बोर्ड्स किया. मेरे इतने अच्छे नंबर आए ना. आएंगे obviously was given reason. मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ऐसे पूछा पाछी हो जाती थी, ऐसे ऐसा वाला नहीं यार, चिट्स वाली. मुझसे पूछा बाजी भी नहीं उसमें होती भी थी. डर लगता था, मेरे को भी लगता था. बहुत डर विंटर्स लगता का टाइम था ना, तो कोट और स्वेटर 10-10 लेयर पहनकर आते थे, तो हमने कोट के नीचे यूं फोन छुपा दिया. लोग शूज में भी ऐसे वो सॉक्स सब के नहीं करा. नीचे भी कुछ. अरे लिख कर जाते हैं हाथ पैरों पर. या दैट वाज द अलग ही. फर्स्ट टाइम आई चीटेड. एंड मैंने एक बार कॉलेज में ट्राई किया बट मैंने कहा नहीं. It's too risky. With this, we have come to the end of this podcast. I hope you guys enjoyed it. Yeah, we had the most fun. Thank you so much for having us. I think we were the most candid Yes. we've ever been. Thank you. It was a very wholesome environment that you've created. Thank you so much. It was lovely having a conversation with you. For more real, raw, and unscripted podcasts, don't forget to subscribe to our YouTube channel and also follow us on our Instagram handle. Till then, bye! Woo!